Hello students, now we are on the second part of microorganisms, friend and foe part 2. We'll see the important topic, that is what is vaccination. We know that vaccines are very important at the time of birth. Vaccination is being done regarding various diseases. Okay, अलग अलग डिजीज के लिए बचपन में ही अलग अलग एज के फेजेस के हिसाब से हमें वैक्सीनेशन दी जाती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी दैट व्हाट इज वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन इज अ ट्रीटमेंट विच मेक्स बॉडी स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट एन इन्फेक्शन. कोई भी इन्फेक्शन हो उससे पहले अगर हमें उसे वैक्सीनेशन वैक्सीन दे दे, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी और स्ट्रॉन्गर बन जाता है टू फाइट अगेंस्ट दैट डिजीजेस. ओके, नाउ नेक्स्ट, vaccination involves showing the immune system something which looks very similar to a particular virus or bacteria. अब ये जो वैक्सीनेशन होता है इसके अंदर जो मटेरियल होता है दैट इज मेड अप फ्रॉम डेड वायरस और बैक्टीरिया, सो दैट कि पहले से ही आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से योर बॉडी इज ऑलरेडी प्रिपेयर टू फाइट दोज काइंड ऑफ वायरसेस और bacteria. So this is very important, which helps the immune system be stronger when it is fighting against the real infection. तो already आपके अंदर वो diseases को fight करने के लिए वो capable हो जाता है and it works efficiently in your body. Now we must know that how vaccine works. So first of all, when a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी उस काइंड के सोल्जर्स इनपुट कर दिए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले से ही वैक्सीन अगर ले लिया है तो इट मीन्स ऑलरेडी आपके बॉडी में वो सोल्जर्स इंजेक्टेड है. तो कभी भी उस काइंड के वायरसेस अगर आपके बॉडी में एंटर होते हैं, सो द सोल्जर्स विल गेट एक्टिवेटेड एंड दे विल स्टार्ट वर्किंग अगेंस्ट them. The body also remembers how to fight the microbe if it enters again. तो बॉडी ऑलरेडी अवेयर रहता है कि इस काइंड के डिजीज के लिए या फिर इस काइंड के वायरसेस और बैक्टीरियाज के लिए हमें कैसे लड़ना है. सो इट इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड विथ इट. सो if a dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kills them by producing suitable antibodies. As I've already said you, during vaccinations, it is made by dead or weakened microbes are introduced to our healthy body and which is already prepared, and the body is already prepared to fight against those suitable antibodies. Now we'll see the antibodies remains in the body and we are protected from the disease causing the microbes. This is how vaccination works. Several diseases like cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccinations. You can see that जैसे अभी कोरोना वायरस का ट्रेंडिंग चल रहा है, वैसे ही एक टाइम था जब स्मॉल पॉक्स बहुत डेडलीस्ट डिजीज था and that also has been eradicated by proper vaccination process. अब तो उसके भी vaccinations at the time of birth के बाद 1-2 महीने के अंदर वो भी vaccinations दे दी जाती है, तो जिससे क्या है कि वो भी almost eradicate हो चुका है. right now कोरोना वायरस जिसके लिए हम vaccines का ही वेट कर रहे हैं सबसे ज्यादा, it means वैक्सीन अगर डेवलप हो जाता है तो उसे भी हम eradicate कर सकते हैं. ठीक है. सो वी आर ऑन द सर्च टू आइडेंटिफाई दोज वैक्सीन्स एंड द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स was Edward Jenner. I have showed you a pic over here, you could have seen here, and it is in the year 1798. Now the next part of this slides will be these days. Vaccines are made on a larger scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases, and these are very important because microorganisms plays a very important role for the production of vaccines. Now we'll see that how the soil fertility can be increased by the microorganisms. Now we'll see that some bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. तो कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो
नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेल्पफुल है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, जो हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. दैट नाइट्रोजन साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर नाइट्रोजन साइकिल प्रॉपरली चल रहा है तो हमारा जो इकोसिस्टम है इट विल बी इन प्रॉपर सिस्टम में चल रहा होगा, राइट. सो नाइट्रोजन फिक्सेशन विल बी रिलेटेड टू the fertility will be increased. why? because हमने already previously पढ़ा हुआ है कि leguminous plant में रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं. सो दैट इज द टॉपिक विच इज रिलेटेड ओवर हियर. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. Okay, so this is the main function of microorganisms in plants and animals. And cleaning the environment, how it is being useful. आपने ऑलरेडी देखा होगा कहीं कि कभी भी डेड और डीकेइंग प्लांट एनिमल्स हैं, डेड प्लांट्स है, तो कुछ टाइम के बाद यू विल सी दैट प्लांट कुछ टाइम के बाद वो गायब खत्म हो जाता है, डीके हो जाता है. कैसे होता है? दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस माइक्रोब्स. हम जो मैन्योर बनाते हैं, यू माइट हैव सीन इन द फर्स्ट चैप्टर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैन्योर. मैन्योर को कैसे बनाया जाता है? अगेन आई विल रिकॉल यू. एक पेट बनाया जाता है, वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल डंग, ह्यूमन वेस्ट, उसके अंदर डाल के विल कवर इट एंड विल मेक इट फॉर we'll keep it for 1 month so that microbes reacts and then manure is being prepared. So microbe is very useful for the decomposition of any waste products. So अगर waste products का decomposition नहीं होगा तो अर्थ में कितना वेस्ट जमा होगा आप सोच भी नहीं सकते. अब तक तो पूरा अर्थ वेस्ट से ही भरा रहता. So plant waste has been converted into manure by the action of microbes. You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes डेड एनिमल्स ऑन दी ग्राउंड. तो आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो डेड और डीकेड होते हैं तो वो कहाँ गायब हो जाते हैं? दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द microorganisms. You find that they disappear after some time, and what is the main reason? That because of microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. तो वो धीरे 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 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करता है और उन्हें सड़ाने का काम करता है, यानी कि रॉटन. ओके, दिस सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. वो क्या होता है? फिर सॉइल के साथ मिक्सअप होता है एंड देन यू कैन सी दैट प्लांट्स का जो न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन जो भी रहता है वो सॉइल के साथ मिक्सअप एंड अगेन इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स. Now here two figures are given. The topmost one, the blue color, is was blue green algae, microscopic view है, और नीचे वाला जो है you could find that a dead animal जो धीरे धीरे decompose हो रहा है. Now we'll see what are the harmful effects of microorganisms. Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. कुछ microorganisms responsible है for the disease. Such disease causing microorganisms are said to be as an pathogens. Okay, so some microorganisms spoil food, cloth and leather. तो कुछ ऐसे होते हैं कि जो इनको स्पॉइल करते हैं. डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस, वो तो एनिमल्स के रिगार्डिंग था. नाउ व्हाट विल अफेक्ट द हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल अफेक्ट द ह्यूमंस. Now pathogens enter our body through air we breathe, the water we drink or the food we eat. ये बहुत main source है from which a pathogen can enter in your body. Now first of all they can also be get transmitted from an infected person to the other infected person or non-infected person or a carrier through an animal. जो अभी के situation में you might have seen कोरोना वायरस में एक इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को इफेक्ट कर रहा है. सो वो भी एक काइंड ऑफ कैरियर की तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं, राइट. सो ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू वाटर, थ्रू एयर, थ्रू फूड. ओके, microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases. I don't find any doubt in that you won't know about communicable diseases. You have already studied what are communicable diseases which can transfer from one person to another person easily. That is said to be as communicable. And how this communicable diseases spreads, कैसे ये काम करता है? Now first of all we'll see that there are some carriers over here. When a person suffering from common cold sneezes,
जैसे कि अभी कोरोना वायरस में हो रहा है, कोई भी स्नीज करता है, मान लो कोरोना पेशेंट स्नीज कर रहा है, देन व्हाट विल हैपन, देन माइन्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम योर नोज और फ्रॉम योर माउथ विल spread out, and what will happen, carrying thousands of viruses are spread in the air, और आजू बाजू जो भी लोग खड़े होंगे अगर वो आसपास रहते हैं तो दे विल ब्रीथिंग करना तो कोई रोक नहीं सकता, सो वो ड्रॉपलेट्स उनके अंदर चला जाता है, एंड देन इट विल एक्ट and multiply, and this virus will infect the other person. Same thing happens over in the case of coronavirus. And one more important thing, that you should have a mask in that situation, okay, if you are infected by any viruses. The viruses may enter the body of a healthy person while breathing, जो मैंने अभी आपको बता दिया, and there are some insects and animals which act as a carrier of a disease causing microbes. कैरियर मतलब क्या, जिसके थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक डिजीज ट्रांसफर हो रहा है, नॉट ओनली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट माइट बी फ्रॉम एनिमल्स टू एनिमल्स, ओके. नाउ दे आर सेड टू बी एज एन वेक्टर्स. आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे वेक्टर्स क्या होता है, मीन्स व्हाट, द कैरियर ऑफ द डिजीजेस आर सेड टू बी एज एन वेक्टर्स. नाउ we'll move to the examples which are the carriers of these diseases, that is viruses. Housefly is one of the such carriers. The flies sit on the garbage and animal excreta, और फिर बाद में क्या करते हैं, वो हम जहाँ पे खाना कवर्ड नहीं होता वहां पे आके बैठ जाते हैं, तो वो पैथोजन वहां से ट्रांसफर होके तुम्हारे फूड में आ गया, और आप तो बैठे ही हो खाने के लिए, आप तो सोचोगे भी नहीं, देन यू ईट इट, and then that will transfer to your body, and that contaminated food is likely to get sick. So it is always advisable to keep food covered, okay. Now some of the mosquitoes are also responsible for the carrier of viruses, that is female anopheles. ये term textbook में भी दिया हुआ है, you have to know this, that is Anopheles mosquito which carries the parasites of malaria, okay. तो ये ध्यान रखना कि what is the name and what are which disease do they carry on. And next is Aedes mosquito, that is a carrier of dengue virus. अभी कुछ टाइम पहले if I talk about in the month of December, there are more cases of dengue, and that is all because of Aedes mosquitoes जो इस डिजीज को कैरी ऑन करते हैं. You can see that there is an image of Anopheles mosquito and Aedes mosquito, right? Now next is, how can we control the spread of malaria or dengue? So first of all, जहाँ पे पानी स्टोर होकर रहता है हमें उसे बंद करना होगा, because the major carrier of this disease is mosquito. तो मॉस्किटो ही नहीं रहेंगे तो डिजीज होने के चांसेस कम है. सो व्हाट यू हैव टू डू, वी नो दैट मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, हेंस we should not allow water to store at particular place. So what we'll do, we'll try to empty the collected waters in coolers, tires, flower pots, etc. And by keeping the surroundings clean as well as dry, mark it as very important, that is dry होना चाहिए हर जगह, we can prevent mosquitoes from breeding. इससे उनका breeding नहीं होगा. And the last topic of this part 2, that is some of the list given in your textbook. I have collected it from your textbook. ये कुछ कुछ डिजीज ऐसे हैं किसके थ्रू ट्रेवल होते हैं, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ लिस्ट ऑन द फर्स्ट कॉलम, दैट इज अ लिस्ट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, सॉरी फर्स्ट रो, दैट इज अ ह्यूमन डिजीज, causative microorganisms, mode of transmissions, preventive measures. So TB, measles, chicken pox, polio, they all are caused by viruses except TB. So what are the mode of transmissions? It is already given, air, and one. How we can prevent it, keeping the patient in complete isolation. यहाँ पे आप कोरोना वायरस भी इंक्लूड कर सकते हो. Keep the person belonging to the patient away from those of the others. Vaccination to be given at a suitable age. So particular age में इसके vaccines available रहते हैं. अभी तो जो deadliest वायरस है उसका तो वैक्सीन आया नहीं है, so we have to wait for that. Now उसके भी वायरसेस वैक्सीन्स आ जाएंगे, then what you have to do, उसके भी हमें वैक्सीन लेना कंपलसरी हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज कोलेरा एंड टाइफॉइड. दे आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, और ये जो डिजीज है बैक्टीरिया, यू कैन सी दैट बैक्टीरिया मोस्टली कॉजेज बाय द कंटामिनेशन ऑफ वाटर. और उसके लिए आप कैसे क्या क्लियरेंस कर सकते हो, वाटर को बॉइल करो, खाना प्रॉपरली पकाओ, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, वॉशरूम से आओ तो तुरंत हाथ धोना रखो, ठीक है. सो दिस आर द थिंग्स व्हिच वी हैव टू मेंटेन इन द केस ऑफ बैक्टीरिया
bacterial causing disease. Hepatitis B, that is virus, and it is because of contamination of water. Drink boiled drinking water. Vaccination is necessary in this case. Malaria, protozoa, and we know that अभी अभी हमने पढ़ा mostly mosquitoes responsible होते हैं. We must use net use कर सकते हैं. And repellents, ओडोमस पढ़ा है. ओडोमस बॉडी में लगा दिया जाता है तो मच्छर आसपास नहीं आते. कॉइल भी अवेलेबल है. कछुआ छाप सुना होगा, राइट? स्टैम्प Indian made. Spray insecticides and control the breeding of mosquitoes by not allowing water to collect in the surroundings. So this is what all about the part. So we are going to complete it over here. Here our part 2 gets over.